Hello to everyone. Today's topic is real numbers. Real numbers क्या होते हैं? First of all, we have to understand. Real numbers वो numbers होते हैं जिसमें हमारे पास rational और irrational both the numbers are defined. So that is your real numbers. Rational and irrational. Now what is rational numbers? Rational numbers are those numbers that can be written as in the form of P by Q and where Q is not equals to 0. So we discussed these things in the 9th class, right? Now in the 10th class, we are going to discuss the fundamental theorem of the arithmetic. So first we are going to discuss the theorem and then we are going to discuss the questions in which we are going to find the HCF and the LCM. So let us start the questions and first we discuss the theorem. So theorem क्या है? Fundamental theorem of arithmetic कि every composite number. So first of all we have to understand there are two types of numbers. One is your prime numbers and other is your composite numbers. अब हमें prime numbers और composite numbers तो पता ही होंगे, right? अगर नहीं भी पता then it's okay, हम discuss कर लेते हैं अभी. तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड बाय वन ओनली. सो प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? स्टार्ट फ्रॉम 2, ओके, नॉट फ्रॉम 1. 1 एक्सेप्शनल केस है क्योंकि 1 खुद से ही मीन्स एक ही है फैक्टर उसका. प्राइम नंबर्स में वी कैन से देयर आर 2 फैक्टर्स जो डिवाइड करते हैं, एक तो खुद से itself or by 1. ओके, तो प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 लाइक दिस. अब सिंपल सी बात ये हो गई कि जो प्राइम नंबर्स नहीं है अदर्स नंबर्स वो कौन से हो गए आपके? कॉम्पोजिट नंबर्स हो गए. फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9 ऑल दीज आर योर कॉम्पोजिट नंबर्स, राइट? अब क्या बोल रहा है कि every composite number can be expressed, means factorized, as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs. तो इसका मतलब समझ लेते हैं वो कहना क्या चाह रहा है, राइट? कि कोई भी आपका कॉम्पोजिट नंबर है, अगर हम उसको एक्सप्रेस करें या फिर उसको हम बोल दें फैक्टराइज करें, किसमें? As a product of primes. For example, let us take 4. Okay, so 4 के prime factors क्या हैं आपके? That 4 can be expressed as a factors 2 into 2. तो यहाँ पे 2 into 2, तो यहाँ ये 2 and 2 क्या है? We know that these are the prime factors. अब ये जो फैक्टराइजेशन है 4 की वो क्या होगी? यूनिक होगी, मीन्स और किसी वे से वी कांट राइट. You can see कि 4 can be written as only as 2 into 2 और कोई हमारे पास फैक्टराइजेशन का फॉर्मेट नहीं बनता है जिसमें हम 4 को लिख सकें एज अ प्राइम नंबर्स. और क्या होगा? एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर आप कैसे भी लिख सकते हो. ओके, तो 4 तो हो गया. अब लेट अस टेक अनदर एग्जांपल 12. 12 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 3, 4 into 3, राइट? सो इसको we can write 3 into 2 into 2, we can write 2 into 3 into 2. ओके, किसी भी ऑर्डर से लिख दो, इट डजेंट मैटर. बट जो आपके पास फैक्टराइजेशन है वो क्या है कि 2 टाइम्स आएगा और 3 1 टाइम आएगा. यही एक यूनिक फैक्टराइजेशन है. आप कोई भी कॉम्पोजिट नंबर ले लो, उसका अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं, उसको अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो एक ही फैक्टराइजेशन प्रोसीजर है, एक ही तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कोई भी हमारे पास ऐसा कोई प्रोसीजर या फैक्टराइजेशन नहीं होगा. ओके, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर इट कैन बी. तो आपने 8th में प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा होगा. Okay, how we are going to do the prime factorization? Let us take an example. Suppose मेरे पास नंबर है 1, 0, 4. This one is your composite number. अब इसके फैक्टर्स हमने लिखने हैं, so we can apply the prime factorization.
ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, जिसमें आप डिवाइड करते हो ओनली विद द प्राइम नंबर्स, राइट? सो फर्स्ट इज योर 2, so 2 into 5 and here 52. Again we can divide this value as 2. So हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 226. Again divide by 2. So we have 13. Now 13 is a prime number. We can't divide it by any other number. So 104 के factors क्या है आपके prime factors, that is 2 into 2 into 2 into 13. और वी कैन राइट नाउ, सो यू कैन सी 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, सो वी कैन राइट 2 raised to power 3 into 13. Same 12 can be written as 2 raised to power 2 into 3. So this one is the representation of any composite number in terms of prime factors. In this video, we are going to basically discuss the HCF and LCM. अब HCF और LCM क्या है? Can you tell what is the full form of LCM? So LCM full form is least common multiple. And what is HCF? That is highest common factor. So how we are going to find the LCM and HCF 6 and 20? By prime factorization method, means we are going to make its prime factors. उसी मेथड से करना है, आपके पास और भी मेथड्स है, we can find the LCM, right, by the taking 6 and 20 as common and then you can do this prime factorization. We are not going to apply that one. We are going to do the separately 6 and 20. So 6 can be written as 2 into 3. So factors of 6 are 2 and 3. Similarly, we are going to find 20, that is 2, then 10, 2 and 5. So हमारे पास कितने factors हो गए 20 के, 2 into 2 into 5, or we can say 2 raised to power 2 into 5. Now we are going to find the HCF, means highest common factor. कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट फैक्टर हमने देखना है. अब यू कैन सी हियर द कॉमन फैक्टर इज ओनली 2. ओके, हियर इट इज 2, हियर अगेन 2. तो यहाँ पे 2 स्क्वायर है हमारे पास, बट हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, सिंगल एक ही है, तो 2 एक ही फैक्टर वी आर गोइंग टू टेक. सो दैट इज योर HCF. HCF क्या है हमारे पास 2. सो एक ही फैक्टर हमारा कॉमन है. नाउ फॉर LCM, व्हाट इज LCM? LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल. सो यहाँ पे कितने आपके पास मल्टीपल्स हैं, 2, 3 एंड 5. 3 की पावर क्या है 1, 5 की पावर कितनी है 1. अब 2 की हमारे पास 2 एंड सी पावर कितनी है यहाँ पे 1 और 2, तो ये आ गया आपका 2 स्क्वायर. यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस दोनों में से हाईएस्ट वैल्यू ले लेते हैं, 2 और 2 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर HCF. नो, कॉमन फैक्टर क्या है आपका 2, और उसकी जो पावर है उसमें से जो मिनिमम वैल्यू रहेगी आपकी, दैट इज योर HCF. 1 और 2 में मिनिमम वैल्यू क्या है आपके पास 1 है 2 की, सो HCF इज 2. और LCM में मैक्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसकी मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं जो कि ऑपोजिट है. तो हमारे पास 2 की पावर क्या होगी 1 और 2 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2 है, तो LCM क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5. So that is the LCM of 6 and 20. That's it. अब एक हमारे पास फॉर्मूला है. सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं A and B. So multiple of A and B is equals to product of LCM and HCF. This one is applicable only for two numbers. अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो ये वेरीफाई नहीं होगा, एप्लीकेबल
नहीं होगा. So A into B is equals to LCM into HCF. Let us verify this value. Okay. So अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले, दैट इज A into B, तो एक नंबर है हमारे पास 6 और एक नंबर है हमारे पास 20. So 6 into 20 is your 120. अब राइट हैंड साइड क्या है आपका? LCM इज 2 square into 3 into 5 and HCF क्या है आपका? 2. So अब अगर हम मल्टीप्लाई करें, so let us see, 2 into 2 4, 4 into 3 12 into 5 into 2, that is 10, that is 120. So it verifies this formula. So this formula is very much important, that is A cross B is equals to LCM into HCF, that is only for two numbers. So let us move to the next question. So the question is, find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM. Same way we are going to apply for 96 and 404. So let us apply the prime factorization. 6, see 2 से divisible होगा because आपके ones place पे even value है, that is 6. So it is divisible by 2. Okay, so that is 48. Again 8 क्या है आपका? Even number, so again it will be divisible by 2 only, so 24. Again 4 is your even number, so 12. Then again it will be divisible by 2, 6, and then we know 6 is 2 into 3. So here we can write 96 prime factors 2 raised to power 1, 2, 3, 4, 5. So 2 raised to power 5 into 3. Now 404. So let us find 404. So 4. Again ones place is even number, so divisible by 2. So 202. So again by 2, 101. So 101 is your prime factor. So its prime factorization is 2 square into 101. So what is the HCF here? So HCF क्या है? आपका कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 2. और इसमें से 2 की पावर मिनिमम वैल्यू क्या है आपके पास? 2. सो HCF क्या होगा आपका? 4. अब LCM में आप सभी जो कॉमन मल्टीप्लायर्स है, जितने भी मल्टीप्लायर्स दोनों नंबर्स में यूज हो रहे हैं, वी आर गोइंग टू राइट. कौन कौन से हैं? दैट इज 2, 3 एंड 101. सभी मल्टीप्लायर्स हमने लिख दिए, 2, 3, 101. अब इनमें से सभी की वी आर गोइंग टू टेक द मैक्सिमम पावर. 101 की मैक्सिमम पावर क्या है? 1. 3 की मैक्सिमम पावर क्या है? 1. और 2 की मैक्सिमम पावर इज 5. So that is your LCM. So that is your LCM, that is 2 raised to power 5 into 3 into 101. That's it. So that is the HCF and LCM of 96 and 404. Now let us move to the next question. Now again we have to find the HCF and LCM of these three numbers using the prime factorization method. So we are having 6, 72 and 126. We know that is 2 into 3. 72, let us find out 72. See, 2 again one's place is even, so divisible by 2. So it is 36. Then again by 2, that is 18. Then again by 2, 9. Now 9, we know that the multiples of 9 are 3 and 3. So here 2 raised to power 3 and 3 raised to power
2. Now 120. 120. So it is 260, again by 2, 30, again by 2, 15, then by 3 and 5. So it is 2 cube into 3 into 5. So what is the HCF? Common factors are in all these three numbers 2 and 3. And the minimum power of 2 and 3 in each case is 2 raised to power 1, 3 raised to power 1. So HCF is 6. Now what about LCM? Now the LCM. LCM, each factor. Okay, we are going to write. So each factor क्या है? 2 into 3 into 5. अब 5 की maximum power क्या है? 1. 3 की maximum power is here 3 raised to power 1, here 3 raised to power 2, here 3 raised to power 1. तो maximum power is 2. Same for 2. अब 2 की maximum power क्या है? 3, then 3 and 3. Maximum power is 3. So we can write 2 raised to power 3 is 8 into 9 into 5. So LCM is 360. Now let us see, जो हमने फॉर्मूला लिखा था कि दो नंबर्स अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें क्या वो इक्वल होगा LCM and HCF के LCM and HCF. So let us see. So यहाँ पे हमारे थ्री नंबर्स क्या हैं? 6 into 72 into 120. So let us do the product of these three numbers and that is equals to 51840. Now the product of HCF and LCM, that is 360 into 6, that is 2160. So it means we can say the product of the numbers is not equals to HCF into LCM. मीन्स अगर हमारे पास थ्री नंबर्स का प्रोडक्ट है तो वो इक्वल्स टू नहीं होगा द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, राइट. सो यहाँ पे ये वेरीफाई भी हो गया. नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दो नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM. So let us move to the next question. Given that HCF of these two numbers is 9, find the LCM of these two numbers. Simple. अभी तो डिस्कस किया हमने. क्या भी डिस्कस किया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF एंड LCM ऑफ द नंबर्स. तो यहाँ पे टू नंबर्स कौन सी है? 306 into 657. इसका HCF is 9 and LCM we are going to find out. That's it. So LCM is equals to 306 into 657 divided by 9. So just simplify it. So we can cancel it by 3. So it is 102. Again by 3, so we can divide 102 by 3. Yes, so that is 34. Now we can take the product of 34 into 657, that is 2233. That's it. So that is the LCM of 306 and 657. Let us move to the next question. Check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n. Means 6 की power n, 6 raised to power n can end with the digit 0. What does it mean? If we are going to multiply 6 raised to power n. n क्या है? नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर. वी नो द नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6. So for example, if we are going to take 6 raised to power 1 is 6. So it end with 6. If we are going to take 6 square, ये मैं सिंपल बता रही हूँ. ओके, 6 square means 36. So again 6. तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा ना देखेंगे एक ईच नंबर को. So what is the procedure? We are going to take 6 factors.
So 2 into 3 raised to power n. Digit 0 कब होगी? When we are having the prime factors as 2 into 5. 2 into 5 gives you the end as 10, right? So 2 into 5 means अगर 2 into 3 into 5 हमारे पास होता raised to power n करते, then we can say कि 6 raised to power n can end with the digit 0. So how we are going to write this one now? We can write it as, so we can say if the number 6 raised to power n ends with the digit 0, then it should be divisible by 5. Okay. As we know that any number with the unit place as 0 or 5 is divisible 5. So in simple you can write कि this one is your prime factorization of 6 raised to power n, any number if we are having, okay, and we have to prove and we have to check whether it can end with the digit 0. So apply the prime factorization and then you can say the prime factorization of that number does not contain the prime number 5. So it means cannot end with the digit 0. That's it. Way you can prove or you can check whether it will end with the digit 0 or not. So हम सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके नहीं देखने लगेंगे, तो हमारा सिंपल सा प्रोसीजर रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन. So let us move to the next question. Now explain why these numbers are composite numbers. So simple, composite numbers कौन से numbers होते हैं? जो divisible by, मतलब composite numbers कौन से होंगे? जो prime factors नहीं है, और prime factors हमें मालूम है prime numbers कौन से हैं? जो खुद से divisible है या फिर 1 से divisible है. तो अगर हम ये proof कर दें कि ये prime numbers नहीं हैं, then what does it mean? They are the composite numbers. That's it. So how we are going to prove that? So the number is 7 into 11 into 13 plus 13. So हम इसको multiply करके नहीं देखेंगे. Okay, we are just going to take 13 common and that is 7 into 11 plus 1, or we can write 13 into 77 plus 1, 78. So what does it mean? It means it is not only divisible by itself or by 1, it is divisible by so many digits, so many factors. So it means it is a composite number. Same for 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. So 5 common आ गया यहाँ पे, तो 7 into 6 into 4 into 3 into 2 plus 1 again. So here it is simple, 7 into 11 plus 1, 78. Now again we can say, so 5 तो है 1 से भी divisible by है, 5 से भी divisible by है, और ये जो factor होगा again, even though if it is a prime factor, then it is not a prime number, it is a composite number because 5 into something is again there. So it is not a prime number, it is a composite number. That's it. So last question of this video is, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Okay, so let us draw first a circular path. So this one is a circular path. Suppose this one is your starting point. Here Sonia and Ravi are there. So here it is Sonia, ये Sonia है, और ये let us say this one is Ravi. बहुत ही सुंदर बच्चे हैं हमारे सोनिया एंड रवि, दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, राइट. सोनिया को एक राउंड लेने में मीन्स अगर शी गोइंग टू रन, ओके, भागेगी
सो कितना टाइम लेगी, इट विल टेक 18 मिनट्स टू कंप्लीट वन सर्कल। और वहीं अगर रवि भागेगा देन ही विल टेक 12 मिनट्स। अब दोनों ने स्टार्ट क्या किया, एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे, और अब क्वेश्चन क्या है, और एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में दे आर रनिंग, ओके, एक ही डायरेक्शन में वो भाग रहे हैं, दे आर रनिंग। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट दिस स्टार्टिंग पॉइंट, मीन्स सेम इसी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे वो कब मिलेंगे। इट मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड द LCM ऑफ 18 and 12। ओके, सो 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 into 3 into 3, और 12 that is 2 into 2 into 3। So LCM is your 2 into 3। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, that is 4 into 9, that is 36 minutes। जब भी हमारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा then we are going to find the LCM of the numbers। So that's all about this topic. In the next video we will discuss the irrational numbers, how we are going to prove that this is an irrational number। okay, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, that we will discuss in the next video। if you understand this topic, like, share and subscribe my channel, तो आपको notification आएगी। okay, and if you want to join with me, I will share the link of my Telegram channel। that's all। enjoy yourself and खुश रहो, enjoy करो और मस्ती करो। goodbye।